महक रहा है मधुबन तुमसे, ओ बाबा मधुबन वाले। महक रहा है मधुबन तुमसे, ओ बाबा मधुबन वाले। अगर परिवार में चलने में, तोड़ने पाने में कोई भी कमी होती है तो वो विघ्न छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन तंग करता है। ये क्यों, ये कैसे? परिवार के कनेक्शन में आता है। तो क्यों के बजाय क्यों नहीं करना है, लेकिन हमें मिलकर चलना है। परिवार की प्रीत निभानी। क्यों कि ये बाप का परिवार है, भगवान का परिवार, रवासी परिवार नहीं। नशा रहना चाहिए कि वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह मैं और वाह परिवार। ठीक है, जी करते हो जारी में पासो, जारी में एक में भी कम नहीं। चेक करो, अभी अभी चेक करो, क्योंकि विजयी बनने का साधन ही ये। परिवार के बीच संस्कार निकलते और वो संस्कार मिलाना, खुद भी परिवर्तन करना और परिवार को भी इतने ऊंची दृष्टि में देखना। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि बाप दादा लास्ट बच्चे को भी अति भाग्यवान समझते हैं। क्यों? भगवान को पहचानना साधारण रूप में, बाप को पहचानना जो इतने बड़े बड़े महात्मा है भी पहचान नहीं सके, लेकिन बाप दादा का लास्ट बच्चा भी मेरा बाबा कहते, दिल से मेरा बाबा कहते। तो बाप दादा जैसे लास्ट बच्चे की भी विशेषता देख, जैसे बच्चों को लाड प्यार, याद प्यार देते हैं, वैसे लास्ट वालों को भी देते हैं। तो चेक करो कि 3 में ठीक हो या 4 में ठीक हो या 2 में ठीक हो या 1 में ठीक हो। चेक किया चेक। जो समझते हैं कि मैं जारी निश्चय में
तीर्थ बना है तुमसे ओ अब्बा वो वाले। आवो तीर्थ बना है तुमसे ओ अब्बा वो वाले। महक रहा है मधुबन तुमसे। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 23। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आज का विषय है यथार्थ बोल बोलो। अव्यक्त इशारे जैसे ब्रह्मा बाप के बोल, फरिश्तों के बोल कम बोल और मधुर बोल थे, ऐसे यथार्थ बोल बोलो। कारोबार के लिए बोलना पड़ता है, लेकिन वह भी लंबा नहीं करो। हर संकल्प बोल और कर्म में फॉलो फादर करो। हर बोल में मधुरता नम्रता की महानता हो। इसके लिए स्वयं को निमित्त समझकर हर कार्य करो, तब महानता के साथ नम्रता आएंगी और सफलता मूर्त बनेंगे। पास विद ऑनर योग बल। मीठे मीठे बच्चे, बाप ने आपकी सारी चिंता लेकर आपको रूहानी नशा दिया है। जब यह नशा रहता है तब मस्तक पर चमक दिखाई देती है। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। बाबा की जब शिक्षाएं सुनते हैं तो बहुत बहुत अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में एक गाइड है जो हमें हर कदम पर
डायरेक्शन भी देते हैं और इशारा भी देते हैं। अगर हम डायरेक्शन पर चलते हैं और इशारों पर चलते हैं तो वर्तमान परिस्थिति अनुसार अपना अंदर का, मन का कहें, बुद्धि का कहें, अचल रहना, अडोल रहना, एक रस रहना सहज हो जाता है। बाबा काफ़ी हम बच्चों को, हमको क्या बोलना है, कैसा बोलना है, उस पर बहुत ध्यान खिंचवा रहे हैं, उसका होमवर्क दे रहे हैं कि बच्चे दिन भर ध्यान रखो और अपने शब्दों को, हमारे शब्दों का बहुत महत्व है। जो मनुष्य मुख से बोलता है उससे किसी के अंदर हिम्मत, आशा, उसकी महानता उसको अनुभव होगी। और कोइयों के शब्द ऐसे होते हैं जो आत्मिक विश्वास खो सकते हैं, दिल को चोट लगती है, थोड़ा दुख होता है। तो इसलिए कोशिश यही करें कि हम जिसको बाबा आज कह रहे हैं, यथार्थ शब्द बोलो। एक अयथार्थ होता है जिसमें सभ्यता नहीं होती है, डिसेंसी नहीं होती है, रिस्पेक्ट नहीं होती है, कटुता होती है। लेकिन जो बाबा हमको नम्रता और मधुरता का लक्ष्य दिया है, तो जो नम्रता वाला व्यक्ति होता है उसमें निमित्त भाव होने के कारण उसके जो वचन होते हैं, जैसे कहते भी हैं रूप बसंत, तो उनकी रूप अर्थात धारणा और बसंत अर्थात मुख से रतन और मोती निकलते हैं। तो हमेशा हमें ऐसे बोलना चाहिए जो हर एक ध्यान से एक एक शब्द सुने। जब शब्द हमारे मूल्य वाले होते हैं, वैल्यू वाले होते हैं, तो हर एक सीखना चाहता है। लेकिन हमारे बोल साधारण होते हैं तो बहुत करके मनुष्य एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देता है। तो कैसे एक एक शब्द हमारा मूल्यवान हो, बहुत ही सभ्य हो, नम्रता का हो, सम्मान वाला हो, वो यथार्थ शब्द होते हैं। तो बाबा का इशारा बहुत मिलता है बोल पर। मुझे याद है कि हम लोगों को सिखाया जाता था कि जो जीभ है मनुष्य की, वो एक कैद में रखी हुई है कि सोच के बोलो, सोच के निकालो। क्यों कैद किस चीज की है? दांतों की। तो इसलिए उसको जेल में इसलिए रखा है कि वो, हाँ, जो कहावत है ना कि तलवार की घाव जल्दी भर जाती है, पर जो हमारे बोलने का दुख पहुंचता है, चोट लगती है, उसको भरने में सालों लग जाते हैं। मुख हमारा कैंची का काम भी कर सकता है, संबंधों को तोड़ना। बोल से ही बेशक हमारी भावना अच्छी होती है, पर भावना और बोल मैच करना चाहिए। भावना अच्छी होती है और बोल नहीं एप्रोप्रिएट होते। यथार्थ का मतलब एप्रोप्रिएट, उचित, समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार हमारे जो बोल होने चाहिए वो बहुत एक्यूरेट हो, एप्रोप्रिएट हो और टू द पॉइंट हो। कई बार कोई बात को लंबा करते जाते हैं तो सुनने वाला हम्म, अपनी सुनने की शक्ति को ऑफ कर देते हैं और नहीं सुनते। अगर आप टू द पॉइंट बोलते हैं, शॉर्ट बोलते हैं, तो हर एक को बहुत अटेंशन रहती है, रिस्पेक्ट रहती है, अटेंशन रहती है।
और बहुत अच्छी तरह सुनते हैं। हमारा जो वार्तालाप है स्नेह वाला हो, समझ वाला हो, लाभदायक हो। हम क्यों ये बात कर रहे हैं, उससे क्या फायदा होगा, इसमें क्या प्राप्ति होगी। तो काफी तरह से हम इस बात के विस्तार में जा सकते हैं कि आजकल हमें इशारा मिल रहा है कि हमारा बोलना, हमारा कुछ भी मुंह से निकले, कोई भी शब्द निकले, तो वो ऐसे हो जो सबके दिल को अच्छा लगे, उसको धारणा में सहज लगे और उसको प्रेरणा मिले। कभी किसी को किसी भी तरह से डाउन नहीं फील होना चाहिए, उसे अपनी महानता का अनुभव हो। ये बहुत बहुत ऊंचा कार्य है, पुण्य का कार्य है कि आत्माओं को उनकी महानता का अनुभव कराना। वो हमारी दृष्टि से भी होगा, हमारे बोलने से भी होगा, क्योंकि जितना जितना उनको हमारे शब्दों से शक्ति मिलेगी उतना उनकी उन्नति होगी। और यही तो हमारे जीवन का लक्ष्य है कि खुद भी हम चढ़ती कला में हों और औरों को भी मदद करें कि वो सदा उड़ती कला में रहे, चढ़ती कला में रहे। क्योंकि यही सेवा है, यही सच्चा ज्ञान है कि हम हर आत्मा को जब भी बोले प्रफुल्लित हो जाए, आत्मा प्रसन्न हो जाए। और उससे क्या होता है, सिर्फ संबंध अच्छे नहीं रहते पर कार्य क्षमता भी बढ़ती है। जब अंदर में खुशी होगी, अच्छी फीलिंग होती है, तो जो भी कार्य हम करते हैं वो बहुत बहुत क्षमता अर्थात उस पे योग्यता होती है। तो हमारे बोल का बहुत महत्व है। इसलिए बाबा हमको कह रहे हैं कि बच्चे जैसे ब्रह्मा बाप के बोल फरिश्ते के बोल थे। थोड़ा सोचने की बात है कि फरिश्ते के बोल कैसे होते हैं। तो बाबा कहते हैं कम बोल। उसी बात को अगर हम थोड़ा सोचते हैं ना, तो लंबी बात हो जाती है। जैसे कल मुझे लग रहा था कि अगर प्रश्न भी पूछा जाए तो प्रश्न ही पूछे रहे, या तो दो भाग में कर दें। पहले बात सुना दो, फिर सुना के भाई प्रश्न क्या है, तो शायद उत्तर देने वाले के लिए सहज हो जाएगा ना। तो एक विधि होती है हर चीज की, और वो विधि बोल से हमें पता चलती है। और बाबा हमेशा कहता है ना, बच्चे विधि पूर्वक करो तो सफलता भी मिलेगी। तो बाबा कहते हैं कम बोलो, फरिश्ते जैसे बोलो, कम बोलो और मधुर बोल थे। जैसे यथार्थ बोल बोलो। ये बहुत अटेंशन देने की बात है। तो बाबा कहते हैं कि कारोबार के लिए जो एक्टिविटीज हैं उसके लिए बोलना तो पड़ता है। बाबा कहता है लेकिन वह भी क्या करना है, लंबा नहीं करो। कहना पड़ता है भाई चलो बात पूरी हो गई ना, बार बार उस बात को रिपीट करना, बार बार, क्योंकि वो फीलिंग्स है अंदर की। इतना जरूरी नहीं कहना, पर अंदर जब तक फीलिंग खत्म नहीं होती मनुष्य बोलता रहता है, बोलता रहता है। और फिर दूसरे की फीलिंग्स का ध्यान नहीं रहता है। मैंने अपनी फीलिंग्स तो बोल दी, पर हमारे बोल से जो दूसरे को फीलिंग्स है वो कैसी होनी चाहिए। ये बड़ा सूक्ष्म में एक दूसरे को ऊंचा उठाना, सुख देना, उसको आगे बढ़ाना, उसके बड़े बड़े सूक्ष्म
साधन है ये। तो बाबा कहते हैं कि वो भी जो कुछ कारोबार करना है वो भी लंबा नहीं करो। बोलना तो पड़ता है, जरूरी भी है, पर लंबा नहीं करो। आपके संकल्प, आपके बोल और कर्म में फॉलो फादर, तो उसमें क्या है, बहुत शांत रहते हैं, साइलेंस है, एकांत है। न केवल ये, पर बहुत अच्छी अच्छी मनन चिंतन भी होता है। तो इसलिए बोलना जरूरी है, परंतु बाबा कहता है लंबा लंबा मत बोलो। जो भी बोलो उसमें मधुरता हो। बाबा कहते हैं कि इसके लिए स्वयं को निमित्त समझकर हर कार्य करो। निमित्त का भी अर्थ बहुत थोड़े समझते हैं। बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है, तो निर्माणता रहेगी ना। मैं हूं ही निमित्त, तो निर्माणता है, और निर्माणता है तो मधुरता भी है। तो निमित्त भाव बहुत जरूरी है, और भावना और भाषा दोनों सेम होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि अब महानता के साथ साथ क्या करना है। महानता के साथ नम्रता भी आएगी, और क्या होगा, सफलता मूर्त भी बनेंगे। सफलता में खुशी होती है। सफलता ऐसे है जैसे हमने बीज बोया, उसका फल निकला। मुझे याद है, आम का पेड़ होता है, उसमें बुड़ लगता है पहले, फ्लावर्स, फिर छोटे छोटे आम। आम बहुत छोटे छोटे हमने देखा, बहुत अच्छा लगता है देख के कि अभी फल लगने लगा है। जीवन में भी सफलता, वो खुशी तो लाती है, और सफलता होनी भी चाहिए। क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस टाइम पर बोलना है, कितना बोलना है। तो ऐसे व्यक्ति के प्रति सबके दिल में सम्मान होता है। पर आपके मन में जो आता है, जो फीलिंग्स है, वो बोलते ही रहो। तो जरूरी नहीं है कि दूसरों के दिल में आपके लिए कोई प्रेम की भावना हो। तो इसलिए अगर हमें माननीय बनना है, पूजनीय बनना है, तो हमारे बोल पर हमको बहुत बहुत अटेंशन देना है। यथार्थ बोल बोलो, मीठे बोलो, थोड़े बोलो, धीमे बोलो। ये स्लोगन हमारा दादियों का भी था, बाबा का भी था, और हम सभी बच्चों को भी इस प्रकार से अपने मन में मनन चिंतन करते हुए अपने बोल को बहुत बहुत सुचारू रूप से हो। जैसे अंदर में मनुष्य, चाहे महावाक्य है, चाहे लिखना होता है, तो ऑर्गेनाइज करते हैं ना। लिखना होता है तो भी ऑर्गेनाइज करते हैं, क्या सेंटेंस लिखना है। तो जितना अपने मन को भी हम व्यवस्थित करेंगे, सोच कर बोलो। अच्छी तरह अगर सोच के बोलते हैं तो वो बोल समझदारी का होता है। और सदा ये तो ध्यान रखो कि मुझे औरों को महानता का अनुभव कराना है। हर एक को अपनी वैल्यू का अनुभव कराओ कि आपका तो बहुत महत्व है, आपका पार्ट तो बहुत ऊंचा है। हम्म, तो इस प्रकार से सदा ही अपने बोल को यथानत करो। अभी हम कुछ मिनटों के लिए
साइलेंस में बैठकर इस बात पर विचार करेंगे, जैसे मेरा बोल सदा ही यथार्थ हो, प्रेरणादायक हो। ओम शांति। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए। अव्यक्तवाणी तारीख है 18 जून 1977। योग की पावरफुल स्टेज कैसे बने? परिस्थितियां खींचेंगी। ऐसे टाइम पर ब्रेक पावरफुल न होंगी तो पास न हो सकेंगे। इसलिए महारथियों की प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जिस समय विस्तार में बिखरी हुई बुद्धि हो और उसी समय स्टॉप की प्रैक्टिस करें। जैसे ड्राइवर को जब मोटर चलाने की प्रैक्टिस कराते हैं तो जानबूझकर ऐसा रास्ता बना हुआ होता है जिससे मालूम पड़े कि यह कहाँ तक एक्सीडेंट से परे रह सकते हैं। इसी रीति से यह भी पहले से ही प्रैक्टिस चाहिए। स्टॉप कहना और होना, यह है अष्ट रत्नों की सौगात। एक सेकंड भी यहाँ वहाँ नहीं, इसलिए सिर्फ 8 निकलते हैं। ऐसी प्रैक्टिस है। अच्छा, आगे की मुरली कल सुनेंगे। ओम शांति। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए। हो सुन कर के मन हर्षाए। जब मैं पहली बार मधुबन में आया था तो रात्रि की क्लास थी, तो उसमें रात को जब क्लास समाप्त हुई तो हम लोग अपने रेस्ट के लिए अपने अपने कमरे में गए।
तो बाबा ने उस रात को मुरली के बाद कहा कि बच्चे, जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनको एक चिट्ठी लिखनी है। आप लोगों ने अनुभव किया है, उनको भी आप निमंत्रण दें कि शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में कैसे नए संसार की नई सृष्टि की, सत्य की दैवी सृष्टि की रचना कर रहे हैं। आप भी अपना पूरा वर्षा लो, अब नहीं तो कभी नहीं। ऐसा एक उसको पत्र लिखना है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, कि वो यहाँ आए और अपना इस बात को समझे और वर्षा प्राप्त करे। तो बाबा ने ये आदेश दिया और फिर पूछा कि अच्छा कौन कौन लिखेंगे। तो हमने भी हाथ उठाया कि हम लिखेंगे। उसमें कुछ लोग और भी थे। तो बाबा ने कहा हाँ बच्चे लिख लाना और फिर कल सुबह को दिखाना। तो हुआ ये कि जब हम अपने कमरे में गए तो लाइट ऑफ हो गई। तो अब सुबह की क्लास उन दिनों में मेरे ख्याल में 4:30 बजे होती थी, 4 या 4:30 बजे। 4 से 4:30 योग होता था। उसके बाद मम्मा आती थी, वो मुरली चलाती थी, फिर उसके बाद बाबा आते थे। ऐसे ही क्लास का टाइम था। तो सुबह तो नहाने धोने और तैयार होने में टाइम लगना था, यही टाइम था लिखने का। लेकिन वो लाइट ऑफ हो गई। तो हमारे कमरे में और भी थे, उन लोगों ने भी सोचा था कि हम भी लिखेंगे। तो वो कहने लगे कि आप कैसे लिखेंगे, अब तो अंधेरा हो गया है, चलो सो जाते, फिर कल देखेंगे। बाबा कहेंगे तो बाबा को कह देंगे कि बाबा वो तो अंधेरा हो गया था। तो हमने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, बाबा का ये हमारे लिए पहला आदेश है। ये सदगुरु कह दीजिए, टीचर कह दीजिए, पिता कह दीजिए, उनका पहला हमारे प्रति फरमान है। और हम कहेंगे कि हम नहीं करेंगे तो ये तो अवज्ञा करने की आदत पड़ जाएगी। और शिव बाबा तो त्रिकालदर्शी हैं, उनको जरूर मालूम रहा होगा कि भाई लाइट चली जाएगी। उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि आप लिख लाना, तो हम तो लिख के जाएंगे। तो उन्होंने मेरे ऊपर मजाक उड़ाया कि अजीब सा आदमी है, अंधेरे में कैसे लिख जाएगा, कोई बिल्ली जैसी आंखें थोड़ी है इसकी जो लिख के जाएगा। बहती प्यार की धार, दृष्टि तेरी है निराली, बहती प्यार की धार, भूल ना सकेंगे बाबा हम तेरा अनुपम प्यार। Om Shanti. Imbibe the virtues of sweetness and humility to become great. Speak accurate words. Father Brahma's words were angelic. He spoke few but sweet words. Speak accurate words in the same way. Even if you have to speak because of your activities, do not speak too much. Follow the Father in your every thought, word, and deed. Let there be the greatness of sweetness and humility in every word. For this, consider yourself to be an instrument before you carry out any task, and then, with greatness, there will also be humility, and you will become an embodiment of success. Om Shanti. Om Shanti. Welcome to Vikti Parivar. Today's day 23. Imbibe the virtues of sweetness and humility to become great. Today's topic: speak accurate words.
Pass with honor. Waste thought. Mental complaints about the body. Spiritual power to finish waste thought. Power of yoga. Baba's magic mantra. Sweet, sweet child, the Father took away worry and gave you intoxication. When there is intoxication, light shines on your forehead. Now we will listen to Mohini Didi. Om Shanti. We all know how to keep ourselves okay, keep ourselves well, right? And on this spiritual journey, constantly improving, getting better and better. Thoughts create vibrations, especially the attitude which we have has really, really powerful vibrations. Some people are very sensitive and also sensible that they are able to catch vibrations, and they try to take what is positive and don't take what they feel is not pleasant or good. But generally what we think is that why that person thinks that way or why vibration. But it's all right. No, instead of thinking about that person, but I should not take it. No, Baba always say don't give sorrow, but don't take sorrow too. This one causes sorrow, but I don't take it. But words are something which are expression of our mind, but they could be heard, right? Like vibrations, sometimes you feel, sometimes not. But words are always heard. And that means what you are doing through your communication, the relationships, and working together as team, everything has a lot to do with communication. As much we acknowledge, as much we are clear. Of course, Baba had been saying humble and sweet. So, quite a lot to pay attention to our words. You know, if there is this realization or importance of words, then when you have already spoken something, after a few minutes you say, I could have said it in a better way. I could have said in a pleasant way, or I could have said in a more softer way. If that realization is there, then I pay attention, and next time when I have to speak, it's definitely more gentle, sweet, more civilized, appropriate. Sometimes some things we say is not timely. Same thing can be more useful at the appropriate time. You know, it's quite a lot really, and you want to organize about how to speak, when to speak, how much to speak. And it's very interesting because within your own self, as we pay attention to our thoughts, similarly, it's very important to pay attention to our words. Because words can trigger off
someone's anger, someone's ego. But if I can, my words should be such that it invokes, not trigger, it invokes within us very beautiful feelings, good feelings, feeling about your own value, about greatness. How do I make someone feel how important everyone is? Of course, through vibrations, but more important are words. I know that even when speaking, if you have to be very clear, and also some people speak very fast, so other person cannot really capture everything. If you are a good kind of thoughtful person, then every word you speak, every sentence you speak, you are thinking before speaking. Otherwise, you just keep saying it, and in a way, you are expressing what you feel about things. They might not be right, right? Maybe other person didn't mean what you are feeling. So lot of things within relationships and communication are how I felt about it. But if you go a little bit beyond, it's like you focus on yourself. We focus a lot on what others do, how they do. All the time thoughts come, why she said it, she shouldn't have done it, why she does this. No? You don't earn income like this, right? You don't accumulate power. Whatever others do, but I should then be more attentive. What should I do? What should I say? So, in a way, attention is more of self progress, self transformation. Always, not always about others. It's such a human nature. But Baba has taught us if you want to accumulate power, if you want to have self transformation, look at yourself. How do I react? How do I respond? Because reaction is never appropriate. Because it will continue. Reaction, then another reaction, then they call it chain of action reaction. So it's a kind of, I feel it's very entertaining, enjoyable how to assemble the right way to say things. It doesn't break but mend everything. Simple words like we go with a big situation and say to Dadi, Janki, it's very big situation. She says, make it small. And then you can deal with it. No, these are simple words, but they stay with you. I still remember that when she used to say, we will feel as our burden had been taken off. And now it's a small matter, and we will be able to solve it. Simple words which she will tell us. Feelings about situation. Responding to situations. And then, of course, speaking about all that. So it's the vibrations of the thoughts, but the voice also is very, very important.
little things, the way you say it. You do it. Can you do it? Is it possible for you to do it? If you just keep saying, do it, do it, do it, other person doesn't really get the right message. Would you like to do it? Can you do it? Is it possible? Can I help you? These little words are comforting and respectful, and they touch the heart and invoke within us love, sweetness, humility. Because whatever way we speak, it invokes many kind of sanskars in others also. So Baba is saying today, speak accurate words, and I would say appropriate. What is appropriate to say at this time? Brahma Baba's words were angelic. So what is angelic words? Baba said he speak little but sweet words. So Baba said that speak accurate words. Is why I'm stopping, because I want to feel what it means to be having accurate words. Even if you have to speak because of activities, because of your activities, do not spend, do not speak too much. We always say keep going on and on and on. They stop it now, right? So if you really speak to the point, it's well received. So Baba says, follow the Father in every thought, every thought, your word, and your actions. You might say, oh, I haven't seen Brahma Baba. How will I follow? It's the teachings, no? So Baba said, let there be the greatness, sweetness, and humility in every word. There should be greatness, sweetness, and humility in your words. So Baba says, for this, consider yourself to be an instrument. We call it Nimit Bhav. So Baba says that consider yourself to be instrument. So more you carry out any task, and then with greatness there will be humility, and you will become an embodiment of success. So what is the true success? How it comes? Whether in the task or what you speak. There are a lot of people, they say, nobody listens to me. They don't care what I say. Instead of thinking that way, one should think, how should I say that it is well received? Lecturers, motivational speakers, all of them, it's the game of words, no? Same is when we speak knowledge or
give someone God's introduction, what words I use. So it's not only for activities of our speaking, but even giving spiritual knowledge or any direction. There has to be a pleasant way, humble way, and the sweet way. So our words should have many, many of these qualities. Om Shanti. Om Shanti, Didi, Om Shanti, Avyakti Parivar. So it seems as though you came back from India and you brought the winter all back to us. Since your return, we also returned to winter. So how are you doing with your time back now? You just came back a few days ago and you're in the evening doing Avyakti Parivar. You don't suffer jet lag like I do? No, it's enough rest and yeah, I'm okay. I mean, it does certain hours of the day, but I'm very good. I'm okay. There's so many angles that we could look at tomorrow. Today is tomorrow Avyakti signal from, but you were using two words, accurate words and appropriate words. What do you mean by accurate and what do you mean by appropriate? Because, let's say they always say that depends on, what the situation is, or also like sometimes we say timely, This is not the appropriate time. Like you are giving a good teaching, you are giving something like very good, but not in an appropriate way or at appropriate time. It's like a kind of sensible to say things in the appropriate way and at the appropriate time also. Then they are heard, they are useful, beneficial, and you also feel that you have been heard. Because a lot of people have that difficulty. Nobody listens to me. They do what they want. I let them do what they want. But when we are together in family and work as a team, we need to be together, right? We cannot just say, it's all right, whatever anyone. No, we all have to do things together. So accurate is could be more vocabulary, but appropriate is more like quality of our words. We're listening to Brother Jagdish, and as I was listening to him, I'm remembering the brothers. They were always senior brothers. They never became dadas. We had our dadas that I met, Dada Kishore, Dada Vishwaratan, and so Chandrahas Dada. And so even Gopal Dada, we had them all. But then with the senior brothers, they always were bhais. They were always senior brothers. Bhai Sab. They were always Bhai Sab. So I'm thinking about accurate and appropriate with the way they spoke. And now I'm going to tell you what I feel, and then you could tell me what you feel. I think Brother Jagdish Pai, was a philosopher. His tone was a philosopher. His tone was a scholar. His tone was, he knew what he said. So he would speak in this accurate way, in a way that your intellect in listening to him
it became very tiring. If you listen to him for more than 20 minutes, your intellect is tired because your intellect has to follow him, and then it's too much. It's too much. On the other hand, Brother Nirware, I think he spoke appropriately, so appropriately that you don't agree with him in what he's saying, because he always wanted to be appropriate and he always wanted to please. He was a people pleaser. And so, and he had this tone of speaking very slowly, very laid back, in so much that once I said to him, Brother Never, hurry up and speak, because by the time you finish your sentence, I forgot what you started with. So I'm not able to respond because I forgot what you said. You're taking it so long that I can't follow you because I forget. I was teasing him. But he always said what was appropriate, but sometimes I feel it wasn't necessarily true. But he said what was appropriate because that's what the person wanted to hear from him. Now, what do you think about these two? And then I'll take Ramesh Bhai and Brij Mohan Bhai. What do you think, the accurate and the appropriate? Brother, the philosopher is accurate, the people pleaser is appropriate. I think if we can have combination of both, that will work very well in the sense of, how much people want to hear is also important in accuracy and appropriate. Because if they are not ready to hear, as you said, that after 10 minutes, 15 minutes, your intellect is so full or stressed that you really don't want to hear more, right? You feel that you have enough. And see, one is speaking more on an intellectual level, other is speaking from heart. And what Nirvana did is that taking the feelings in mind of others, how will they feel? What should I say that they feel good, they feel encouraged, they don't get disappointed? So he was more into that kind of responding and helping the souls with their feelings. So I think one is more from heart, other is more from intellect. But I think if there can be combination of both, from the intellect and also heart, then I think it can work definitely, appropriate and accurate both. Hmm. Okay, I agree with you. Nirvana Bhai always spoke to feelings. Jagdish Bhai spoke to understanding. So it's the head and the heart. But then you take someone like Brother Ramesh. Have you ever heard Brother Ramesh giving a class? He never has a comma, he never has a full stop. There was no punctuation in the way he spoke. He was like a super fast train from Delhi to Abu Road. Fast. He spoke very fast and he just was going like that. Now, what he was always saying, I mean, he was Baba's lawyer, he was Baba's accountant, he was Baba's, if there was anyone that was accountable, it was Ramesh Bhai. So he spoke with a lot of accountability. But the way he spoke was a super fast express from Delhi to Abu Road, nonstop. Or I could say from New York to Delhi, Air India, super fast, supersonic fast. And then you have Brother Brij Mohan Bhai. Now, he was always, he spoke in a way in which there was, he was always aware of public opinion. He was always aware of the image that he had to uphold in the eyes of the public, in the eyes of the government, in the eyes of the Delhi, the capital. And so he, when he would speak,
you knew that what he was saying carried a meaning that was bigger than what he was saying. Like you would ask him a question. Like I once asked him a question about attachment, and the response he gave me was there is attachment individually, but there is also attachment of association. So when he spoke more always like he's associating with the public opinion. He's associating it with a bigger picture. So, what would you say of the way these two spoke? One accountability, one of association. He was always speaking to the public. The other was always speaking because he wants to hold everyone accountable. That means what your explanation is that the aware connection of awareness and words, right? That whatever is the awareness, whether it is about public opinion, whether it is, Ramesh Pai was in family, all others were single. So Ramesh Pai, whenever he spoke, were more to me the experiences of his life and being a professional. So I think that awareness, background, whether educational, social, all that has some influence on our words, right? So accuracy is according to also that awareness, and I think that if, what Baba says, if we create the awareness as an instrument, as God's child, or whatever awareness, those vibrations will create the words accordingly, to awareness. And more we connect awareness and words, they will be accurate and appropriate. And of course, I think speed has also connection with when we are young, we speak very fast. I had to tell so many, can you speak slowly so that, and as you grow mature and you have more experiences, then when you are speaking as if you are thinking and speaking, not just from the intellect, but it's also from the heart. So I think that, your feelings about everyone is okay, but my feeling is more like, some spoke more intellectually, some spoke from their heart. And But if don't we can combination, that's the appropriate and accurate. But all four brothers met met Brahma Baba, Sakar Baba. All four were nurtured by him. All four experienced Baba's humility and sweetness. And so therefore, all four, it didn't matter the difference, the different ways that they expressed themselves. There was the flavor of Brahma Baba through them. They all had that humility. They all had that sweetness. I mean, they were really, really our big brothers. They may tell us off. They may tell us what we did wasn't right. But the love with which they did it, the love that they embraced us with, in hindsight now, I think they inherited that from Baba, and the way they had to work with the daddies. And these were like brothers that came from the world in major senior positions. And then they had to come and work with these daddies and became the backbone of the daddies, but had to put the daddies in front. But the respect that they give the daddies, they may have differences, and that was fine. But ultimately, the respect that they give to the daddies was incredible, don't you think? Yeah, definitely, because they understood recognition of Baba, then family, then it's God's task, and all that understanding gives them that kind of feeling and sense of responsibility. Because they were so. I remember I was in Shantivan,
and something happened, and they came to know. So when they saw me, first thing they will ask that how am I and is everything okay, which I miss now because there is no one really ask you. But they were like big brothers, and all the time. You know, one thing which is very powerful is their good wishes for us. You know, they always not only sweet, but they had good wishes. And because of their good wishes, it helps us to experience that closeness, to understand the signal and ability to work together. You know, so many things happen. Yeah, so definitely they have not only words, but they have good wishes too for us. What was it in Nirbhai's tone and words that made you say yes to him to be the head of the organization? I think that because, you know, he has deep love for everyone, and he always saw the positive side of that person. Like he will never look at shortcomings or weaknesses or anyone's nature. And he will always say very good things about everyone. You know, so all those qualities, I think, made him his words were appealing, very appealing. It touched the heart, and one says yes to that, you know. The He trust, is the very trust. honestly express himself, you know. Mm. So thank you. I have another Mm. big question here, but I don't have the time to ask you. I think my time is up. But I'll ask you maybe next Wednesday. So thank you. And it's wonderful. I'm remembering those brothers a lot now. I don't know why, especially in relation to Brahma Baba asking us to do things the way he would have done it. Those brothers did. The Dadis did, of course. The brothers did, and now the Didis are doing it. Yeah. Mhm. Good. Thank you, and Om Shanti. Should. Shanti, thank you. So tomorrow is Thursday. We're scheduled from Amritwala 3:30 a.m. to 4:45 a.m. In the evening 5 to 6 p.m. English Sakar Murli. Together with that, in a breakout room, Avyakti Children Murli class 5 to 5:30 p.m. 6 o'clock Bhatti will start, followed by Hindi series, Bog offering, and the English series. Anyone who would like to offer Bog, please send your request to 516-717-9171. Now let's remember Baba and take Drishti from Didi.